Right. So today we're gonna just do practice. Practice of good problems. Practice of good problems on sequential series. Now sequential series एक ऐसा टॉपिक है, देखो यहाँ से क्वेश्चंस तो आते हैं, है ना। अगर मैं किसी भी रैंडम एग्जाम को उठा के देखूं तो मुझे सीक्वेंशियल सीरीज का मिनिमम एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन मिल जाता है। कंसेप्ट जो होता है वो कंसेप्ट भी बहुत काम का है, बिकॉज ये कंसेप्ट भी आपका बहुत अलग अलग जगह यूज होता है, अलग अलग चैप्टर्स में यूज होता है। सीक्वेंशियल सीरीज इज वन ऑफ दोस टॉपिक जहां से मर्ज करके क्वेश्चंस बहुत आसानी से बन जाते हैं। सीक्वेंशियल सीरीज, एक मिनट रुको, ये क्वेश्चंस निकालने दो। है ना, तो एक काम करते हैं, अपन जेई वाले क्वेश्चंस को उठाते हैं। जैसे ये पहला वाला क्वेश्चन, तो अपन क्या करेंगे, जेई के क्वेश्चंस को उठा के देखेंगे कि जेई में किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। So I will take random questions from mains advance. So अगर इस क्वेश्चन को अपन गौर से देखें तो क्वेश्चन बोल क्या रहा है, a1 a2 a21 b and ab such that summation of 1 upon an into an plus 1 is given as 4/9. The sum is 189. I have to find out a6 into a16. देखो, जब भी अपन एपी की बात करते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सो देयर आर टू थिंग्स दैट कम्स इनटू पिक्चर। वन इज दी ए एंड डी, है ना। सिंपल सा रूल है, एपी की कहानी है तो ए और डी निकाल लो, बाकी सब कुछ निकल जाएगा। जीपी का कहानी है तो ए और आर निकाल लो, बाकी सब कुछ निकल जाएगा। सो ओवर हियर इन दिस एग्जांपल वी विल आल्सो ट्राई टू फाइंड आउट दी ए एंड डी। सो ये जो a1 a2 a21 दे रखा है, इसको मैं ए प्लस डी, ए प्लस 2d इस तरह से लिख लेता हूँ। कहाँ तक जाएगा, 21 तक। सो a प्लस 20d, दिस वुड बी योर लास्ट टर्म। ए अपना एपी है। अब जिसका सिग्मा दे रखा है उसका अपन टीएन निकालते हैं, या टीआर बोल रहा हूँ। तो 1 अपॉन ए आर इंटू ए आर प्लस 1 आएगा। ए आर कितना हो जाएगा, ए प्लस आर माइनस 1d, और ए आर प्लस 1 कितना हो जाएगा, ए प्लस आर डी। है ना। देखो पॉलिनोमियल कहाँ पे बन रहा है, डिनोमिनेटर में बन रहा है। जब भी पॉलिनोमियल डिनोमिनेटर में बनेगा तो हम लोग क्या करेंगे, टेलीस्कोपिक सीरीज लगाएंगे, है ना। बिकॉज ऐसे क्वेश्चंस में अपन क्या करते हैं, हमेशा टेलीस्कोपिक सीरीज ही लगाते हैं। दैट इज व्हाट वी ऑलवेज डू। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, टेलीस्कोपिक सीरीज लगाएंगे। मतलब दो टर्म्स में ब्रेक करना है इसको। सब देखो, मैं इसको अगर ब्रेक करूंगा तो ये मेरे पास हो जाएगा 1 अपॉन ए प्लस आर माइनस 1d। समथिंग माइनस समथिंग का फॉर्म बनना चाहिए, है ना। जब मैं एलसीएम लूंगा तो इधर आर डी आएगा, इधर माइनस आर प्लस डी आएगा, तो ऊपर डी बनेगा। तो बाहर 1/d कर देता हूँ ताकि मेरे को न्यूमेटर 1 मिल जाए, है ना। न्यूमेटर मेरे को एडजस्ट करना पड़ेगा ना, तो वही मैंने एडजस्ट किया, यहाँ पर कुछ नहीं किया। ये आ गया मेरा टी आर। अब इस टी आर को कर दो 1 से लेके 20 तक का एस एन। तो S20 कितना हो जाएगा, सिग्मा टी आर, आर गोज फ्रॉम 1 to 20। तो मेरे पास 1/d तो बाहर निकल जाएगा। 1 डालूंगा तो कितना हो जाएगा, ए माइनस ए प्लस डी। 2 डालूंगा तो ए प्लस डी माइनस ए प्लस 2d, एंड सो ऑन। और 20 डालूंगा तो 1 अपॉन ए प्लस 19d माइनस 1 अपॉन ए प्लस 20d, यही बनेगा ना। अब देखो टर्म्स मेरी कैंसिल आउट हो जाएंगी सारी ऑल्टरनेट टर्म्स। पहली वाली बच जाएगी, आखिरी वाली बच जाएगी। इसको और सिंप्लीफाई कर लो, 1/d। इसका एलसीएम ले लोगे, सो दिस वुड बी 1/a इंटू ए प्लस 20d। ये किसके बराबर हो जाएगा, ए प्लस 20d माइनस ए, तो ऊपर 20d आ जाएगा। ये हो गया समेशन अपना।
डी से डी कैंसिल हो जाएगा, 20/a × a + 20d। ये कितना दे रखा है, 4/9। तो ये जाएगा 9 5 45। तो मेरे पास आ जाएगा a × a + 20d जो है वो 45 के बराबर है। बन गई पहली इक्वेशन। अब ए और डी में एक और इक्वेशन चाहिए अपन को। उसके लिए उसने बोला सम ऑफ दिस एपी इज 189। इसका मतलब पहली सारी की सारी 20 टर्म्स का सम निकालूंगा। 20 टर्म्स है ना, सॉरी 21 टर्म्स है। 21 टर्म्स का सम निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, 189। सम निकाल दो। सो 21 टर्म्स का सम n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, दिस इज इक्वल टू 189, राइट। 21 इंटू a प्लस 10d इज इक्वल टू 189। 189 7 का मल्टीपल है क्या, बिल्कुल है। 7 3 सा 7 2 सा 14 49 27 7 7 सा 49। तो ये 3 9 सा हो गया। सो अपने पास आ गई अगली इक्वेशन, a + 10d इज इक्वल टू 9। एक इक्वेशन ये है, राइट, और एक ये है a × a + 20d, दिस इज इक्वल टू 45। दोनों को सॉल्व कर लेते हैं साइमल्टेनियसली, तो अपने पास a और d निकल के आ जाएगा, राइट। तो यहाँ से एक काम करते हैं, a की वैल्यू निकाल लेता हूँ और यहाँ पे डाल देता हूँ। सो a कितना हो जाएगा, या एक काम करो, a मत निकालो, d निकाल लो। a को मैं a लिख रहा हूँ, a + 20d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 - a, दिस इज इक्वल टू 45। ये कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, 18 - a। अब देखो क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व नहीं करेंगे अपन इसको, है ना। क्वाड्रेटिक बनाओगे तो लेंदी हो जाएगा थोड़ा सा। सिंपल लॉजिक से आंसर निकाल लेंगे अपन। नाउ इफ यू गाइस ऑब्जर्व, a × 18 - a दो नंबर्स का प्रोडक्ट है। दो नंबर्स का प्रोडक्ट 45 आना चाहिए, और इन दोनों का अगर सम करूंगा तो 18 आना चाहिए। सो 45 को दो नंबर से ब्रेक करो कि मल्टीप्लाई करने पे 45 और ऐड करने पे 18 आ जाए। 15 और 3 मिल गया ना। तो a मेरा 15 हो जाएगा, राइट, और a मेरा 3 हो जाएगा। दो पॉसिबिलिटी से a 15 होगा तो ये 3 बन जाएगा, a 3 होगा तो ये 15 बन जाएगा। सो a 15 हो जाएगा तो d कितना हो जाएगा, यहाँ से d निकाल लो। a 15 है तो 9 - 15 है -6, -6/10। और अगर a 3 है तो d कितना हो जाएगा, 6/10। ठीक है, आगे अपने पास ए और डी। अब जो भी पूछा उसने वो आंसर निकाल सकते हैं, है ना। सो अगर इस पूरी स्टोरी को मैं देखूं तो यहाँ पे क्या हुआ, एपी का इन्वॉल्वमेंट हुआ। तो सबसे पहले आपने एपी को लिखा तो एओडी के टर्म्स में लेके चले गए, बिकॉज मुझे एओडी में ही लेके जाना है। एट द एंड आई वुड बी एबल टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ ए एंड डी फ्रॉम देयर। ठीक है। दूसरा फिर मैंने देखा कि जो मेरे को सम निकालना था, उस सम में डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल बन गया था। सो अगर डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल बन गया, सो वी ऑल नो दैट the only way in which we can find out the sum is the telescopic series. So all you have to do is break that term into two parts, right, such that the two parts are in an expression of a minus b something, right, with a different sign. उसके बाद तो फिर अपने वो टेलीस्कोपिक वाले लॉजिक से अपन ने सब निकाल दिया, एओडी में तो कंडीशन आ गई, है ना। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, 2021 में आया ना। हाँ, 2021 पेपर की अगर मैं बात बताऊं स्पेशली, right, the exam got delayed, right, by almost like 6 months. So उस पेपर के अंदर मेजोरिटी क्वेश्चन जो थे ना वो लेंथी थे, right. So they played around only one concept, one logic, right, how much you can be calm inside the examination when lengthy questions come. तो स्पेशली मैथ्स की बात करें तो चाहे वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीक्वेंस सीरीज, एवरी क्वेश्चन वाज लेंथी। चलो इस वाले क्वेश्चन को ट्राई करते हैं नेक्स्ट। देखो व्हाई आई एम टेकिंग दीज क्वेश्चंस ओवर हियर, बिकॉज थोड़ा बहुत तो इन क्वेश्चन से हमें आइडिया लगता है कि यार एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा हमें क्लैरिटी मिलती है कि यार एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं दे आर नॉट दैट डिफिकल्ट। मुझे एकदम आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ सोचने का जरूरत नहीं है। इट्स ओनली द बेसिक कंसेप्ट, राइट, बिकॉज इट्स ऑलमोस्ट बीन लाइक 6 months दैट यू आर इनटू आईआईटी जेईई प्रिपरेशन। तो अभी ना, अभी तक कैसा था ना कि टॉपिक तुम्हारे सिंपल थे, या टॉपिक ऐसा बोलो कि कंटिन्यूशन थे 10th 11th में। Now things would be different. Now things, you will have different topics in maths,
With some of them you might not feel comfortable, with some you will feel comfortable. अब कहीं ना कहीं ऐसी बातें पीपिन होना स्टार्ट होंगी कि यार whether I will be able to get a good IIT, good college, तो उसका प्रिपरेशन होगा कि नहीं होगा, मैं इस लायक हूँ कि नहीं हूँ, अलग अलग थॉट्स आते हैं. दिस इज द फेस, नवंबर से लेके मार्च, अगले 4 महीने तुम्हें ये सारे नेगेटिव थॉट्स आने वाले हैं. सो एक चीज राइट जो मैं हमेशा बोलता हूँ, देर आर ओनली हैंडफुल ऑफ स्टूडेंट्स who do a complete 2 year preparation. If you just do the 2 year complete preparation, right, you are ahead of majority of the students. That is the first thing, right? Second, yes, the chapter is gonna be slightly tricky, difficult. Why? Because you are going to learn them for the first time. So yes, you will feel slightly uncomfortable, but it is a matter of 3-4 months. That's it. There might be a pressure of backlogs, right? कि मेरा बहुत backlog चल रहा है, मेरा ये chapter pending है, वो chapter pending है. Trust me, it's natural. It happens to every child. No matter if a child is the topper of the academy or it is not the topper of the academy, this happens. Backlog will remain, will be there. The only thing you as a student has to focus upon is that there should not be a topic where I have not solved anything. You will not let go the concept or the theory classes. You will make sure whatever time is available, you attempt. That number might can be 50, that number might can be 60, that number might can be 100, right? If you're not being able to finish your module, that is strictly okay, right? No worries with that. You are not lagging at all. But if you're leaving a topic, that is where you're lagging. So make sure you know the concept. You are there in the theory classes, right? You understand all those concepts. Problem solving, ऐसा नहीं कि सर ने बोला 50 मेरे 50 हो गए मैं आराम से सो रहा हूँ. नहीं. What I mean to say is कि तुम जितना खींच सकते हो उतना खींच लो. अगर तुम 50 तक खींच पा रहे हो, it's well and good, right? Take it to 50. No worries. Because, right, this is a time when your course, runs. राइट, बिकॉज एज फार एज अगर नेक्स्ट ईयर तुम्हारे बात करें तो तुम्हारा जेई जनवरी में होगा, राइट? तो बाय दी सितंबर एंड और अक्टूबर एंड एवरीबॉडी वांट्स टू फिनिश ऑफ योर सिलेबस. बिकॉज अक्टूबर में फिनिश होगा तभी तो नवंबर दिसंबर में अपन पूरा रिवीजन करेंगे 2 साल के मैथ्स का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, और जनवरी में एग्जाम लिख पाएंगे, राइट? तो अभी चैप्टर्स थोड़े जल्दी जल्दी खत्म होते हैं, राइट, एज कम्पेयर टू व्हाट हैज बीन डन इन 11th, राइट? सो जस्ट स्टे, right, focus on your concepts, focus on your learning, do as much problem solving as you can, right? That's why I decided to take up the examples, the from the PYQs, so that you also understand that there is no rocket science. There is nothing like you have to think out of the box, you have to do that, you have to do that. बहुत सारे लोग बातें करते हैं जेई क्रैक करना तो बच्चों को इतना इंटेलिजेंट होना पड़ेगा, 16 घंटे पढ़ना पड़ेगा, ऐसा थॉट प्रोसेस चाहिए. भाई सिंपल सा है, राइट? अभी सिंपल सा मैं बोलता भी और मैं दिखा भी रहा हूँ कि देखो तुम ही खुद सवालों को देखो, कुछ नया हम नहीं लगा रहे हैं, हमसे वही बेसिक कंसेप्ट लगा रहे हैं कि यार ए बी सम का फॉर्मूला, उसका फॉर्मूला, दैट्स इट. और वो इन्फॉर्मेशन भी हमें उस क्वेश्चन से ही मिल रही है कि क्वेश्चन बोल रहा है कि ये निकालो, तो हमें निकाल के दे रहे हैं. So there is no rocket science. It's pretty simple. The only thing that makes JEE or any engineering exam difficult is the 2 year preparation. है ना? Because वो 2 साल की प्रिपरेशन बहुत लंबा टाइम हो जाता है. इतना लंबा अपन को स्टेमिना रखना है. That's it. So the 60% of your success depends upon if you can stay there for the complete 2 year period. That's it. Right. So we'll try this one. अभी देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है. A1 A2 A3, ये पूरा का पूरा फिर से AP दिया हुआ है. If A1 से लेके A10 का सम अपॉन A1 से लेके AP तक का सम का रेशियो is given as 100 by P square, then I have to find the ratio of these two terms A11 by A10, right? So once again, I need to find out A and D. A and D मेरे पास आ जाएगा तो मैं I can do various things. So I'll focus upon A and D. That's why I will take all the terms as A plus D, A plus 2D, right, and so on. Now, in the numerator, I have sum of first 10 terms. So I will use the formula of sum of 10 terms, right? So sum of 10 terms would be 10 by 2 into 2a plus n minus 1d. Sum of p terms. So p by 2 into 2a plus p minus 1d.
This is equal to 100 upon p square, right? So this with 2 gets out with this 2, right? This 10 gets out with this 10. So you will have 2a plus 9d into p square is equal to 10p. Achha, 1p will also get cancelled out. So I will have 10 into 2a plus p minus 1 into d, right? Now you multiply. So you will get 2ap plus 9pd is equal to 20a plus 10pd minus 10d. So you can take p on one side. So you will have 2a plus 9d minus 10d. That is always is p. This is equal to 20a minus 10d. Right. Now see, no matter what a and d I take, right, this equation will always hold true, right? Which means the coefficient needs to be 0. So I can conclude that 20a minus 10d, this will be 0, and 2a plus 9d minus 10d, this will be 0. So I'll get 2a minus d is equal to 0. So I'll get d is equal to 2a. And from here, I got d is equal to 2a, right? So I'm getting the same thing. So if d becomes equal to 2a, this equation will hold true. Okay, so I got one equation. I don't have any other equation, like to find a and d. So let's find out the ratio. So I have to find out a11 by a10. So 11th term would be a plus 10d. This would be a plus 9d. And I know d will be equal to 2a. So replace d by 2a. So this becomes 21a. 18 plus 1, this is 19a. This is 21 by 19. Right? Now you can see. Sir, Nothing that I have used, right? मतलब out of this box जाके या कुछ ऐसा जो मुझे नहीं पहले से पता था. sir, It was pretty simple. क्लियर हुआ? चले आगे. चलो अगला एग्जांपल देखते हैं. नहीं श्लोक, मेरे को तेरी आवाज नहीं आई. अभी बोल. सर मुझे थोड़ी सी आ रही थी इसकी आवाज, कुछ हो रहा हाँ था। अब बोल, अब आ रही है. नहीं, कौन बोल रहा था अभी? सर अभी सर, मैं बोल रहा था, उसकी हाँ, आवाज आ रही थी निश मुझे। की आवाज तो आ रही है मुझे. सर वो पीछे, सर अभी आ रही है आवाज? हाँ अभी आ रही है. सर वो पिछले वाले क्वेश्चन में ऑप्शन एलिमिनेट करके भी हो सकता है ना? पिछले वाले क्वेश्चन में ऑप्शन एलिमिनेट करके इसमें बट, दो ऑप्शन तो ऐसे एलिमिनेट हो जाते हैं ना, बी और डी। क्यों? सर क्योंकि अगर सम 10 टर्म्स का सम 100 है तो ए 10 टेन। टर्म्स का सम 100 नहीं है, रेशियो है. अच्छा। ऐसा भी तो हो सकता है ना, 10 टर्म्स का सम 10,000 हो गया हो और पी टर्म्स का सम 10p स्क्वायर हो गया हो. सॉरी 100p स्क्वायर, तो 100 कैंसिल हो गया मेरा. ओके। रेशियो है ना. व्हेन आई से रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ क्लास इज 2:3, तो ऐसा तो ना दो बॉयज और तीन गर्ल्स ही हैं. हाँ। समझ गया? हाँ। चलिए एक काम करते हैं, ये वाला भी ट्राई करते हैं. ये देखो, इस वाले क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्री का इन्वॉल्वमेंट आ गया था.
10 pi by 9 x 10 7 pi by 18. These are in AP, and 10 pi by 9 y 10 5 pi by 18. This is also in AP. Then you have to find out the value of x minus 2y. तो कहते हैं ना, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री, थोड़ा सा सीक्वेंस एंड सीरीज, दोनों का रूल है. सिंपल सा कुछ नहीं है. It says these three terms are in AP and these three terms are also in AP. X और Y में कुछ रिलेशन ढूंढना है मुझे, तो यहाँ से मैं X ही निकालता हूँ. So X मेरा क्या मिडिल टर्म है, देखो. तो X को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 pi by 9 plus 10 7 pi by 18 by 2, राइट. सिमिलरली Y में क्या लिख सकता हूँ, 10 pi by 9 plus 10 5 pi by 18 by 2. मुझे x minus 2y चाहिए, इसका 2 मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ ताकि x minus 2y यहाँ से बन जाएगा. तो जो मुझे चाहिए मैं वही बना रहा हूँ, x minus 2y. तो ये क्या हो जाएगा, 10 pi by 9. अब देखो, एक चीज मैंने ट्रिग्नोमेट्री में तुम्हें याद हो तो सिखाई थी कि यार जब भी इस तरह के एंगल्स आए ना पाई वाई में, तो हमें ऑब्जर्व करना है एंगल को कि यार कोई एंगल का सम 90 या एंगल का सम 180 या डिफरेंस 90 डिफरेंस 180 ऐसा कुछ मिल रहा है क्या. बिकॉज अगर ऐसा कुछ मिलता है तो वही अपनी स्टोरी डिफाइन करता है, राइट. सो 5 5 बाय 19 और 7 पाई बाय 9, ये कितना हो जाएगा, 3. ये तो 3 हो जाएगा, राइट. 2 नहीं, 7 माइनस 5 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा. माइनस लूंगा तो पाई बाय 9. हाँ, इन दोनों का डिफरेंस पाई बाय 9 है, ठीक है. तो अपन यहाँ पे और क्या कर सकते हैं, पाई बाय 9 है, 2 पाई बाय 9 है. जो और तो कुछ दिख नहीं रहा है सिवाय एलसीएम के. तो अगर मैं एलसीएम लूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 7 पाई बाय 18 माइनस 2, सो माइनस 10 पाई बाय 9 माइनस 2 10 5 पाई बाय 18 बाय 2 आ रहा होगा तो उसको इधर 2 ले जाता हूँ ताकि बार बार मेरे को लिखना नहीं पड़ेगा. फिर फाइनली अपने आंसर को 2 से डिवाइड कर देंगे. राइट, तो मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है. हाँ, इन दोनों का सम 2 2, इन दोनों का सम पाई बाय 2 हो रहा है.
है ना, 7 pi by 18 plus pi by 9. It's pi by 2. So I can write this as tan of pi by 2 minus pi by 9. So this would be cot pi by 9 minus tan pi by 9 minus 2 tan 5 pi by 18. इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये कितना आ जाएगा अपने पास, नीचे आ जाएगा 10 pi by 9 1 minus 10 square pi by 9. I can multiply this by 2 and I can multiply numerator by 2 minus 2 tan 5 pi by 18. So this becomes 2 tan theta upon 1 minus 10 square theta. So this becomes 2 upon tan 2 pi by 9, right? Minus 2 tan 5 pi by 18. So I can take 2 common, 1 upon 10 2 pi by 9 and 5 pi by 18, 4, 9. The sum of these two is also pi by 2. So I can write 5 pi by 18 as pi by 2 minus, so this becomes cot. So this becomes 2 upon 10 2 pi by 9. Both of them would be 2 upon 10 2 pi by 9. Right? So they will cancel out each other. So I'll get 0. So the final value of this is 0. If this is 0, which means twice of x minus 2y is 0, which means x minus 2y is also 0. Right? So in this particular question, if you see, I have to follow, right, the arithmetic progression rule first of all, and then after just the trigonometry logic. And the logic was the algorithm is pretty straightforward, right? The sum of two angles, the difference of two angles. We look for those angles which will give us 90, 180, right? The first priority is towards 90 and 180. If not 90 and 180, then we go for if the sum of two angles is 60 or 45 or 30 or the angle that we know. Right? So let's try another question. So this next question is from geometric progression as well as from the log series. So are you guys aware about the expansion of log? Or I'll Yes, sir. just. Yes. Right, so this is the question. Let's can try this one. Log of is given as x minus x square by 2 plus x cubed by 3 minus x raised to the power 4 by 4 and so on. And this goes to infinity. Now, why do I have to use this? Let us see. If I observe this particular expression, it is 3 by 2 x square plus 5 by 3 x cubed plus 7 by 4 x raised to the power 4 and so on. So now over here, I can see the x has power which is increasing, right? I have 3 by 2, 5 by 3, 7 by 4. These are the terms. In the option, I can see log, right? So 1 plus x is this. So if I find 1 minus x, so I'll replace x by minus x. So I will have minus x square by 2. Replace x by minus x. So every term will become negative, right? So you can multiply with minus. So minus log of 1 minus x is nothing but equal to x plus square by 2 plus x cubed by 3 and so on to infinite. Let me call this as 1. So now I have to simplify this. So the question says find out the answer for 3 by 2 x square plus 5 by 3 x cubed
plus 7 by 4 x raised to power 4 and so on. So this 3 by 2, I can write this as 2 minus half, right? This is 2 minus 1 by 3. This is 2 minus 1 by 4. So I can take the two terms separately. I will have x square plus x cube plus x raised to power 4 and so on. Then plus I will have minus x square by 2 minus x cube by 3 minus x raised to power 4 by 4 and so on. So this 2 into, this is a GP, right? Sum of GP, so infinite terms of a GP. So x square upon 1 minus x plus, what is this? This I can see over here, but with a minus sign, right? So I can write minus of log of 1 minus x minus x, right? This would be the positive, minus is negative, yeah. This is my answer. So now you can simplify this one, 2x square upon 1 minus x plus x plus log of 1 minus x. This would be your answer. Simplify this one, it becomes 1 minus x. So x plus x square plus log of 1 minus x. So my correct answer is option number 1. Right, so over here in this particular series, right, if you observe, it became GP, but before that I have to use the log of 1 plus x expression. Secondly, 3 by 2, 5 by 3, 7 by 4, right? Now if I observe, these all are 2 minus half, 2 minus 1 by 3, 2 minus 1 by 4 and so on. Right, so a similar example, not similar example, another example that came in the integer type is this one. Right, you have to find the value of 1 plus 2 by 3 plus 6 by whole cube, 6 by 3 square and so on till infinity, right? To the power log of 1 by 3 plus 1 by 3 square plus 1 by 3 cube and so on till infinity. Log base is 0.25. So basically a combination of two different series in the one question. You have to first simplify the base. You have to simplify the power, right? Once both of these are done, then you have to find out the answer. Right, so let's try this one. So first of all, we'll simplify the base. Right. So if you observe the base, let's say call this base as x. X is 1 plus 2 by 3 plus 6 by 3 square. So I can see a GP, right, in the denominator. And a 1, 2, 6, 10 is an AP. So it's a AGP, right? So AGP says you multiply with the common ratio and you subtract. Infinite terms, so it will be called infinite. If I take the difference, I will get 2 by 3x is equal to 1 plus 1 by 3 plus 4 by 3 square, 4 by 3 cube. So this is 2 by 3x. This becomes 4 by 3, right? So this whole become infinite GP. With first term is 4 by 3 and common ratio is 1 by 3. So 4 by 3 upon 1 minus 1 by 3. This becomes 2 by 3. So 2 by 3x is equal to 4 by 3 upon 2 by 3 is 2. So from here, x will be equal to 3. Right, so I got my base. Let's look at the power. This is infinite GP, right?
So I can write this as log of 1 by 4 a upon 1 minus r. This is equal to log 1 by 4 1 by 2, right? So this becomes 1 by 4, which power is 1 by 2, square root, right? So answer is 1 by 2. So my answer, or I becomes equal to 3 raised to power 1 by 2. So I square will be equal to 3. Right? So my answer for this particular question would be 3. Clear? Right, so we'll have a small class today, right? This much. So what I'll do